يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا। जिस दिन रूहुल अमीन और फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे तो कोई बोल न सकेगा मगर जिसको खुदाए रहमान इजाजत बख्शे और उसने बात भी दुरुस्त कही हो। ये दिन बरहक है, बस जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार के पास ठिकाना बना ले। The day that the Spirit and the angels will stand in rows, they will not speak except for one whom the Most Merciful permits, and he will say what is correct. That is the true day, so he who wills may take to his Lord a way of return.